Good evening, all of you. I hope you all are doing fantastic and a warm welcome to you in today's video. Today we will look at one of the topic from B.ed first year. It's from semester 2. Subject is learning and teaching and topic is teaching. We all teach, but at least हमको पता होना चाहिए कि teaching है क्या, its meaning and characteristics. Because if we know what is teaching, थोड़ा सा हम लोग इस पे और deep thought देंगे तो बहुत इफेक्टिवली हम लोग टीचिंग क्वालिटी बेटर कर सकते हैं. सो दैट इज द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग टीचिंग का मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक. एंड दिस इज जस्ट it's not a definition, but yeah, just that's what I feel. Teaching is a noble profession. So इससे आप मतलब किसी की लाइफ में एक्सपोनेंशियली चेंज ला सकते हो. सो यू आर काइंड ऑफ लाइक मेंटोर. यू आर आप ऐसे मेंटोर बन सकते हो जो किसी की जिंदगी पूरी तरह से बदल सकते हो. सो या इट्स अ नोबल प्रोफेशन आई वुड से. जस्ट गिव मी अ मिनट, देयर इज इशू विद माय पेन टुडे. इट्स नोबल प्रोफेशन एंड शेपिंग फ्यूचर जनरेशन. मतलब आप जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है आप पूरा उसको शेप कर सकते हो. एंड बिलीव मी पर्सनली आई फील बीइंग अ टीचर, टीचिंग प्रोफेशन या एजुकेशन में इतना पावर है कि इट कैन uproot all the social problems. Be you can think of any social problem. Teaching has an ability to uproot all social evils. So being an effective teacher indirectly or contributing in that as well. So in this presentation, we'll cover characteristic natures and of course importance मैंने थोड़ा बता दिया, but in a formal way we will have a look. And yeah, before I go ahead, please do subscribe to our YouTube channel. It takes a lot of efforts to prepare this kind of content, prepare videos and uploading on YouTube. So please do subscribe, like and comment as well. So introduction to teaching, and I will go as per the bullets and I'll keep explaining what it says. So it includes all activities of transferring education, whatever activities via which we transfer education. So are kind of included in teaching. So teaching includes all activities of transferring education. So आप like if I say कि आप class में कुछ activity करते हो तो that is also part of teaching. The person who provides education is called teachers. Like you all who are pursuing B.eds are called. So you provide education, so you're called as a teacher. Teacher's duty is to motivate students. Very important. See up motivation. So learning and teaching may, I think we have further topics called motivation, जहाँ पे internal external motivation will study in detail. But for this particular topic, it's important that teacher's duty is to motivate student. आप कुछ भी करके थोड़ा like आप रिवॉर्ड का एक उनको ग्रीड दे सकते हो क्लास में. यू टेल देम, आई मीन यू आई मीन कीप प्रेजिंग देम फॉर देयर गुड वर्क. इफ दे कम अप विद गुड आइडियाज, इफ दे डू समथिंग एक्स्ट्रा, यू कीप प्रेजिंग देम. आप कुछ उनको छोटा मोटा पेन, नोटबुक, काइंड ऑफ स्मॉल ट्रॉफी इफ यू कैन अरेंज आप. दोज आर काइंड ऑफ मोटिवेटिंग फैक्टर्स सो दैट स्टूडेंट को ऐसे करने में एनकरेजमेंट मिलता है. सो टीचर्स ड्यूटी इज टू motivate student. And teaching means it's an interaction between teacher and students. So like throughout the day teachers and students spend time together, so there is a lot of interaction between them. So together that activity is called as teaching. Both participate for mutual benefit. So दोनों का participate है. टीचर को जॉब, टीचर का जॉब है मतलब स्टूडेंट्स को टीच करना, एंड स्टूडेंट्स का है कि बेटर करियर प्रोग्रेशन करना है. सो दे आर फॉर देयर ओन बेनिफिट्स, सो इट्स फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स. ऑब्जेक्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑब्जेक्टिव इज टू मेक स्टूडेंट्स स्टैंड ऑन देयर ओन फिट इन सोसाइटी. ठीक है, मतलब आप एक, इट्स नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन. जब भी आप किसी बच्चे को पढ़ाते हो
if you deliver good values, तो he would be not just good in career, but अगर आप उसको अच्छा citizen shape करने में help कर सकते हो, so it's a big contribution by teacher to the society. And there are three aspects of teaching. First is teacher, second is student, and third is education. So like broken down in three parts, three aspects. So teachers, students, and education. So like यहाँ पे देखोगे आप, there is a teacher, there are students, and they are taking education. ठीक है? So yeah, let's go ahead. So formal definition of teaching. So teaching is defined as an interactive process, as we just saw that it's a interaction between teacher and student, primarily involving classroom talk. ठीक है? It includes but not limited to classroom talks. So teaching is an interactive process, primarily involving classroom talks, which takes place between teacher and pupil and occurring during certain definite activities, definable activities. So there are activities defined to teach certain subjects. So interaction between teacher and pupil during those activities is called as a teaching. So this was given by Edmund Amidon. And अभी TF Greens का एक definition देते हैं. From exam perspective, I prefer short ones. So I would suggest this, but rest up to you. Teaching is a task of a teacher which is performed for the development outside. I believe that it's a very simple and straightforward definition. From exam perspective, let's go for this definition. Teaching is a task of teacher which is performed for the development of the child. It's not a growth, it's a development. If you recollect in Sem-I, we studied development and a growth. So it's not just teacher का job. देखो बाकी तो nature करेगा, limbs, height, weight खुद growth होगा. So that is a growth. For a development, reading, writing, communication, everything that you can think of, development of a child. So the task of teacher is to perform development of a child. So nature and characteristics. So desire to share your love for the subject. Just give me a moment. Yeah, so desire to share your love of the subject with students. जो भी से for example, I love maths. तो आप maths के towards कितना affinity रखते हो? I mean, you should have desire to share that love with students so that they will know that why you like that subject. ठीक है? So आप जब भी वो love express करोगे subjects के towards, student will know that what is the motivation for you to love that subject, like that subject. So even if they also like, they can also pursue career in that area. And ability to make material being taught stimulating and interesting. जो भी मतलब आपका मतलब like I would like to explain this with the example. So if you ask me, अगर मुझे किसी को maths का कुछ concept पढ़ाना है, so what I would prefer is कि मैं rather than directly jumping on the subject, पहले मैं उसको थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा, देन आई वुड प्रिफर कि मैं उसको एप्लीकेशन बताऊं कि ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ पे है. सी कैसे, अनलेस यू टेल स्टूडेंट्स कि वो अप्लाई कहाँ होती है चीज, एनीथिंग दैट यू टीच, ठीक है, अगर आप वो स्टूडेंट को कन्वे कर लोगे ना कि वो यूज कहाँ होती है, ठीक है, अगर मैं आपको कोई भी ऑब्जेक्ट भी दे दूंगा ना, इफ यू डोंट नो हाउ टू यूज इट, इट्स यूजलेस. सो अगर आप उनको एप्लीकेशन बताते हो, सो दे विल स्टार्ट लाइकिंग द सब्जेक्ट. एंड आप अगर उसको वो चीज अचीव करने के लिए, इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप जो आपका मटेरियल है, ठीक है, वो आप थोड़ा अच्छे से बनाते हो, विच कैन स्टिम्युलेट स्टूडेंट्स इंटरेस्ट. ठीक है. सो नेक्स्ट इज फैसिलिटी फॉर इंगेजिंग विद स्टूडेंट एट देयर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग. मतलब सी कैसा है ना कि बाय द टाइम वी बिकम टीचर, मास्टर्स एंड B.ed करके, अब हमारा लेवल काफी अच्छा खासा हो जाता है सब्जेक्ट के टुवर्ड्स, बट स्टूडेंट का लेवल उतना नहीं रहेगा. सो इट्स
इम्पोर्टेंट के टीचर को भी वो लेवल पे जाके उनके साथ समय, आप भी थोड़ा जो आपके ब्रेन के मेमोरी पे लिखा हुआ है, आप थोड़े टाइम के लिए उसको रब कर दो एंड ट्राई टू लर्न दैट फ्रॉम द लेवल एट विच स्टूडेंट इज। कैपेसिटी टू एक्सप्लेन द मटेरियल प्लेनली, आपका जो भी मटेरियल है वो आप अच्छे से स्मूथली टू स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करने में एबल रहने चाहिए। अ कमिटमेंट टू making it absolutely clear what has been understood at what level and why, showing concern and respect for the student, ये भी बहुत important है in general। अगर कोई students को in general कुछ other than school भी problem है, if you show them a concern, they are you are concerned for them, आप at least उनको एक बार पूछ भी लोगे ना, it will really help them coming out of those situation। And just respect is, I would say, कि not just students, but being a human being. If you just deliver respect to all the human beings that you interact with, believe me, it's a universal law. It will come back to you. So it's, I would say कि yeah, हम लोग teaching aspects में यहाँ पे teaching as students पढ़ रहे हैं, but let's make it very general because these are very common traits a rational human being should have। A commitment to encouraging independent, ठीक है, तो आप उनको, आप एक कमिटमेंट रखिए कि उनको इनकरेज करोगे। द मेन कैरेक्टर ऑफ टीचिंग इज टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड ट्रेनिंग, आपका, आप उनको गाइड कीजिए, प्रॉपर उनको ट्रेनिंग की दीजिए। टीचिंग इज अ इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये डेफिनेशन में भी था, आई मीन इंट्रोडक्शन में भी था, सो इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट। टीचिंग इज आर्ट, आर्ट टू गिव नॉलेज, आई बिलीव इट्स अ फैक्ट। आप, आपको है ना ये, इट्स आर्ट, एक्चुअली आर्ट के आप नॉलेज ट्रांसफॉर्म कैसे कर रहे हो स्टूडेंट को इन अ इफेक्टिव वे। टीचिंग इज अ साइंस टू एजुकेट फैक्ट एंड कॉसेस ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। सो इट्स आर्ट, इट्स साइंस। सो टीचिंग, आप यू कैन थिंक ऑफ एनीथिंग, यहाँ पे आर्ट बोला गया टीचिंग को, यहाँ पे आपको साइंस बोला गया है। सो या, so bit more on nature and characteristics. Teaching is a continuous process like it was in learning. Teaching can, teacher can teach effectively if he has full confidence on the subject, very important। अगर हमें ही confidence नहीं रहेगा, अगर teachers को ही confidence नहीं रहेगा, or we can teach a subject, very default point। Teaching encourages students to learn more and more। So आपका अगर इफेक्टिव टीचिंग रहेगा तो स्टूडेंट्स उसमें बहुत डीप डाइव करने की कोशिश करते हैं। टीचिंग इज फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल। टीचिंग इज कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स, आप एक्चुअली ट्रांसफॉर्म करते हो इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेट करते हो। इन टीचिंग टीचर इम्पार्ट्स इंफॉर्मेशन इन एन इंटरेस्टिंग वे सो दैट स्टूडेंट कैन, सो एज आई सेड कि आप एप्लीकेशन बताइए स्टूडेंट्स को कि कहाँ पे ये यूज होता है, थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दीजिए, लाइक व्हेन वी स्टडी इन साइकोलॉजी, आप कुछ भी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखिए, आप थोड़ा स्टिमुलेट कर पाएंगे ना स्टूडेंट्स का अटेंशन। सो इट वुड बी बोथ बेनिफिशियल फॉर बोथ। आपको क्लास कंट्रोल में इजी पड़ेगा इफ स्टूडेंट्स आर टेकिंग इंटरेस्ट इन योर सब्जेक्ट्स, एंड एट द सेम टाइम इट विल बेनिफिट स्टूडेंट्स एज वेल, वो सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। Teaching is a tool to help students to adjust themselves in society and environment. So yeah, मतलब it is a tool, मतलब teachers उनको सिखाते हैं कि how to behave actually in the society and environment. So it's kind of, teaching is a tool via which students learn all these things. So nature of teaching, so characteristic, जो common characteristics हैं teachers के साथ वो पढ़ लिए, but kind of quite a few of them are quite थोड़ा nature of teaching के towards incline है, so those have been put in separate slide। So teaching is interactive, so teaching आप one way नहीं कर सकते, like you cannot teach, it should be two-way communication, ठीक है। teaching is a two-way communication, I would say। वन वे इज डेंजरस, आप टीचर पढ़ाते जा रहे हो,
and student is not following, so it doesn't make sense. So it has to be interactive. Teaching is an interactive process, involve two-way communication. यहाँ पे भी लिखा हुआ है, I should not have written, between teachers and student. Effective teaching seek to understand and address individual needs of the student. So very very important point, जो effective teaching है वो स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम एड्रेस करने में फोकस करती है. इट्स अ चाइल्ड सेंट्रल, मतलब आपका जो इफेक्टिव टीचिंग है दैट इज चाइल्ड सेंटर्ड, के स्टूडेंट का डिफिकल्टी कहाँ हो रहा है. अगर सपोज इन मैथ्स, अगर उसको लॉजिकल फ्लो में कहाँ उसको लाइक स्पीड ब्रेकर आ रहा है, सो दैट ही इज नॉट एबल टू ड्राइव हिज लॉजिकल फ्लो स्मूथली. अगर वो that is kind of I mean effective teaching is a tool by which I can tackle this speed breaker in journey of student teaching. Technology enhanced, technology can play a significant I mean I would say audio visual learnings. It's kind of technology का काफी important role है उसमें. And for both, it's I would just read it. Technology can significantly improve teaching, learning, and टीचर इफेक्टिवनेस. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर सपोज यही यहाँ पे कुछ खुद ही ड्रॉ होते जाता था ना, आई वुड हैव एक्सप्लेन्ड यू, इट वुड हैव बीन मोर इफेक्टिव. बट या टूल्स के लाइक gradually we are evolving towards those kind of tools. So yeah, we'll keep updating. So these are not, this slide is not from your syllabus, but just in general, मैं आपको बता देता हूँ something which I felt कि from teaching perspective it is good to have in the presentation. So traditional versus modern method. Traditional passive learning, typical lecture based, with teachers as the primary provider of the knowledge and student as a passive receiver. आज कैसा है लाइक टू वे का इंटेंसिटी बहुत बढ़ गया है. अर्लियर इट यूज्ड टू बी अ लेक्चरर इज टीच ट्रांसफॉर्मिंग नॉलेज एंड स्टूडेंट यूज्ड टू टेक इट. So, and modern is active, student centered, very important. Student centered learning with technology supporting. So modern में आपका क्या हो गया, student centered, technology supporting and differentiated instructions. अलग अलग आप tools use करते हो instruction के लिए, collaboration and creativity. And last one is differentiated modern teaching method, recognize a student method. So ideally this should have been below this. So I would draw an arrow. You can consider this in a modern teaching. Modern teaching method recognize student differences and adapt teaching to meet all learners need. See कैसा है कि very important point, जो modern teaching है ना, उनको पता है all students are not coming from the same background. They are different. So they accordingly adopt the method of teaching. So it helps them to address all students. Student-centered learning. So this is again not in your curriculum, but yeah, from teaching perspective, I've thought good to have. So importance of teaching, social mobility. I mean, ये I think initially मैंने आपको बताया था, informed citizen and national progress. Yeah, I think I covered this in slide first. As I said, कि teaching is a noble profession, wherein being a teacher, it's not just आपका जो like I would say कि आपका जो contribution है, that is not limited to the boundary of the class. अगर आपका बच्चा अच्छा मतलब अच्छे से एजुकेट होके स्कूल से कॉलेज से अगर वो इन्फॉर्म सिटीजन बनता है और प्रॉपरली सोसाइटी में प्रोग्रेस करता है, कुछ वो भी कुछ कंट्रीब्यूट कर पाता है सोसाइटी को अगेन इन अ रिटर्न. सो इट्स काइंड ऑफ ओवरऑल नेशनल प्रोग्रेस अगर मैं बोलूँ तो. So yeah, I would say whatever we just saw from teaching perspective, keep implementing those in your day-to-day teaching. That will really ensure these three aspects: social mobility, informed citizen, and national progress. Yeah, hope you like the video, and if yes, please do share with your friends and other B.ed students who are sharing this. In general, also, it's not just for teaching. I mean, if you are just, I mean, trainer also, you can draw a few bullets from this presentation and apply in your day-to-day training. Thank you very much. Stay connected.